Hello students, how are you? So today we are going to discuss about one more organ of digestive system whose name is stomach. In our previous video we had completed food pipe. We knew about what is food pipe and how food is pushed down to the stomach through food pipe. And it also we studied about functions of food pipe. Okay. So today our next organ of digestive system that to be discussed is stomach, right? तो आज हम लोग स्टमक के बारे में बात करने वाले हैं, आमाशय के बारे में बात करने वाले हैं कि आमाशय है क्या. So let's get started. First of all, I wanted to tell you what is stomach, right? What is stomach? So let's get started. What is stomach? It is called आमाशय in Hindi, right? Okay. So it is called amasha in Hindi. Actually, it is a muscular organ. It is a muscular organ that helps in process of digestion. If we talk about its location, so it is located at center, at left center in the human body. It is located center left in human body, right? This side. Okay. So it is a muscular organ. It is a muscular organ that helps in process of digestion. Okay. So I am going to make you write stomach is a muscular hollow internal organ which helps in process of digestion. So as you can see here, I have written on the board, stomach is a muscular hollow internal organ which helps in process of digestion. Right? Actually this organs helps in process of digestion. Right? This organs makes the food to be digested easily. Right? So this is an internal organ whose location is the center left in the human body. Okay, so let's talk about further about this organ. Okay, through a diagram. So I am going to make a diagram so that you can understand very easily, right? So in this topic we will know about the stomach and how does it function, right? So now I am going to make a diagram to make you understand easily that how does it a stomach looks like and its functions, right? So this is our food pipe. Right? So mostly our stomach looks like this, right? Actually, if we talk about its shape, so it is J-shaped, right? It is a J-shaped organ. It's if we talk about its shape, so it is J-shaped. It is J-shaped, right? You can see here I have drawn this part to show you this is a food pipe. Right? This is a food pipe and these parts
which is connected with small intestine, right? This part which is connected with the small intestine, right? So now we will talk about the function of stomach. Actually, actually, stomach has been divided into three parts. The first part, which joins food pipe and stomach, this is called cardia, and the mid part, this is called fundus, and the last part, which joins small intestine and stomach, is called pyloric, right? So you know that stomach has three parts. The first part, which joins food pipe and stomach, called cardia, and the middle part of stomach is called funda, and the last part, which joins small intestine and stomach, is called pylori. Okay, so it's all about its structure. Now we will talk about how does it function. And one more thing, it is J-shaped organ. It is J-shaped organ. J-shaped. You must have knew about alphabet, right? So it is J-shaped organ. इसका जो आकार होता है वो J shape का होता है, right? And if you talk about its location in the human body, so it is center left. It is center left in the human body, this side, right? Now we will talk about how does it function, right? How does it help in process of digestion? So I hope you got it that I just told you about the three parts of the stomach. मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टमक के तीन पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो फूड पाइप से जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कार्डिया। और ये जो मिड पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। एंड जो ये लास्ट पार्ट होता है, जो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके जुड़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, right? I hope you got it about all three parts of the stomach. Okay, so let's move ahead to know about its function. Okay, so I have drawn here a rough figure of a stomach, right? So now we will talk about its function, that how does it function, right? So now you can see here I have drawn this part to represent food pipe. This one is food pipe. Okay. Now, in our previous video, we knew that food passes through food pipe, right, and enters the stomach. Food passes through food pipe from mouth and enters the stomach. जो भोजन होता है वो हमारे माउथ से फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचता है, right? So as the food, suppose here is food, as the food enters stomach, right? So there are some gastric glands. There are some gastric glands on the internal wall of stomach. On the inner wall of stomach, there are some gastric glands. There are some layer of gastric glands on inner wall of stomach. तो जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, राइट? तो इस आमाशय की जो दीवार में ना कुछ ग्लैंड्स होती हैं, that are called gastric glands. Gastric glands. ये जो है, that I have drawn some dots to represent gastric glands, right? So it is present on inner wall of stomach. तो ये जो gastric glands होती हैं, ये
स्टमक के इंटरनल वॉल्स पे होती है। जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है, राइट, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही भोजन इस अमाशय के अंदर आता है, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। And this gastric juice helps in process of digestion. So let's know about what is gastric juice. What is gastric juice produced by the layer of gastric glands, right? तो चलिए हम लोग बात करते हैं gastric juice है क्या, right? Gastric juice, actually gastric juice contains three components. First one is water, second one is HCl, and third one is enzyme, right? Enzyme. So gastric juice contains water, HCl and enzyme. So now we will talk about what is HCl and enzyme, right? जो गैस्ट्रिक जूस है, जैसे कि हमारा भोजन अमाशय के अंदर पहुंचता है, तो that time our brain signals to stomach to produce gastric juice. That time our brain signals to gastric glands in stomach to produce gastric juice, right? And this gastric juice contains water, HCl and enzyme. So now we will know one by one what is HCl and enzyme. ठीक है? हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है, HCl होता है, एंजाइम होता है। जैसे ही भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। एंड एज द फूड enters the stomach, this gastric gland starts producing gastric juice, right? And this gastric juice consists of water, HCl and enzyme. Now we will talk about what is HCl and enzyme, right? So just I told you, gastric glands produce gastric juice, right? And gastric juice contains three components: water, HCl and enzyme. So now first we will know about HCl, right? HCl, it is a chemical formula of hydrochloric acid. Its name is hydrochloric acid. HCl means hydrochloric acid. H for hydrogen, C for chlorine. So its name is hydrochloric acid. It is an acid. Now we will talk about what does it function in the stomach, right? अब हम लोग जानेंगे कि HCl का स्टमक में काम क्या होता है, right? So basically HCl helps in process of digestion. HCl helps in process of digestion. HCl जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है, डाइजेशन को करवाने में मदद करता है. But don't misunderstand that HCl digests the food. ये मत समझना कि HCl फूड को डाइजेस्ट करता है, नहीं, ये डाइजेशन में मदद करता है. Now we will talk about how does it help in process of digestion, right? So actually you know that HCl is a acid. HCl, its name is hydrochloric acid, right? So you knew that HCl is a hydrochloric acid, right? So its work is to kill the harmful microorganism present in the food.
its work is to kill the microorganisms when we take in the food in our mouth. So there are some many harmful microorganisms present in food, right? So as the food enters the stomach, stomach stomach gastric glands start producing gastric juice, and in that gastric juice HCl is produced, and that HCl kills the harmful microorganisms present in that food, right? So HCl का काम क्या है? To kill the harmful microorganism in food, right? So let's know about the function of HCl. HCl का काम क्या है? HCl का काम क्या है? To kill harmful microorganism in food, right? तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हम लोग जान गए कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे आमाशय में क्या काम है। तो हम जब भोजन करते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु, जो हार्मफुल जीवाणु हैं, वो रहते हैं, तो उनको मारने का काम कौन करता है? HCl, जो कहाँ रहता है? हमारे आमाशय में रहता है। Now it also cause acidity. It also cause acidity due to overeating. जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, दैट्स द रीजन बिहाइंड द एसिडिटी कॉस्ट, राइट? तो HCl ही वो रीजन है जिससे कि हमें एसिडिटी होती है जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट, इट कॉज एसिडिटी, इट कॉज एसिडिटी when we overeat, right? When we overeat, so to digest, so to kill the microorganism in the food, our brain signals the gastric glands to produce more HCl, right? And that more HCl cause acidity. जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि ज्यादा से ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो, और जब वो ज्यादा से ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, मींस HCl गेट एक्सीड इन अमाउंट, राइट? तो वो HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमको एसिडिटी की शिकायत कर देता है, राइट? सो टू गेट द रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी वी टेक एंटासिड एज अ मेडिसिन, राइट? तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। जस्ट अ मिनट। Okay, so we knew that HCl causes acidity, right? So to get relief from acidity we take antacids. एसिडिटी को खत्म करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड एंटासिड antacid medicines, like while when we have complaint of acidity, right? So we take ENO. जब हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो समटाइम्स वी टेक ENO। ENO हम लोग लेते हैं, राइट? ENO दुकान पे 5 रुपए का ENO मिलता है, राइट? तो वो हम क्या लेते हैं? ENO लेते हैं, राइट? ENO लेते हैं। तो ENO में क्या होता है ना, एक एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब देयर इज अ बेस, है ना? There is a type of base contained in ENO. ENO में एक एंटासिड होता है, जैसे कि एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्स, राइट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ एंटासिड, MgOH twice.
So it's a type of antacid, right? So when it reacts with HCl, it forms MgCl and H2O, and our antacid acidity get relieved, right? कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग की एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा खाना खा लेने से जब हम लोग की एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिडिटी का मतलब क्या, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, राइट? द अमाउंट ऑफ HCl गेट एक्सीड इन आवर स्टमक एंड दैट टाइम इट कॉज एसिडिटी। तो उस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड, एंटासिड मतलब क्या, जैसे कि इनो, या हम लोग डाइजीन भी लेते हैं। तो इनो में क्या रहता है, तो इनो में रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। इनो में क्या रहता है, MgOH ट्वाइस, राइट? सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, जब ये HCl के साथ हमारे पेट में, जैसे हमने इनो ले लिया, तो ये इनो में जो ये MgOH ट्वाइस है, ये पेट में जाकर ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, MgOH ट्वाइस, राइट? ये HCl के साथ जाकर रिएक्शन करेगा और ये एक बना देगा क्या, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O, और वाटर को रिलीज कर देगा। नाउ आवर एसिडिटी गेट रिलीव्ड, राइट? वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। तो इस तरह हमारा जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, हमारा सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सो this is how our antacids works against acidity, right? तो इस तरह से हम लोग अपनी एसिडिटी को क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं, है ना? हम लोग सोडा भी पी सकते हैं, सोडा पीने वाला जो सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और एंटासिड एज लेते हैं हम लोग, जैसे कि सोडा अगर हमारे घर में होता है ना, सोडा खाने वाला सोडा, तो उस सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? नाउ इट रिएक्ट्स विद HCl that is present in our stomach and it makes NaCl, नमक बना लेता है हमारे पेट में, और वाटर बना लेता है, and now we will get relief from acidity. So this is how the antacids works against acidity HCl. तो इसी तरह ओवर ईटिंग से या हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाने से हम लोग की एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are all types of antacids, right? तो ये तो बात हो गई एसिडिटी की, HCl की, कि HCl कैसे वर्क करता है, राइट? तो फर्स्ट वर्क ऑफ HCl इज टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो हम माउथ से होके, फूड पाइप से होके जो स्टमक में आया होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है, राइट? और ये एसिडिटी का भी कारण है, एसिडिटी का कारण है, और कैसे इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ये भी हम लोग जान गए, राइट? इनों में क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH ट्वाइस होता है, which reacts with HCl to form MgCl magnesium chloride plus H2O, and our pain get relieved, right? So now third work is of HCl. The third work of HCl, we knew two works of already. First, to kill microorganism. Second, it activates एंजाइम। तो हमने दो वर्क पढ़ा HCl का, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
and it activates enzyme. Just I told you the gastric juice contains three components: water, HCl, and enzyme. So now we knew about HCl. Now we will talk about enzymes. So HCl activates enzymes. So what are these enzymes? Enzymes क्या है और ये कैसे डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, तो ये जानेंगे हम लोग अभी. So actually there are two types of enzymes produced in stomach. Stomach में दो तरीके के enzymes produce होते हैं which helps in process of digestion, and these two enzymes are renin and pepsin, right? And these both enzymes helps in process of digestion and get activated by HCl, right? तो हमारे स्टमक में ये जो दो एंजाइम्स हैं इनका काम हमारे भोजन को पचाने में मदद करना होता है, और ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं किससे? तो HCl से. तो HCl का दो काम हम लोग पढ़ लिए, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू एक्टिवेट दिस बोथ एंजाइम्स, right? So now we knew about what is the work of stomach, right? There are some gastric glands which produce gastric juice. Gastric juice contains three components: water, HCl, and enzymes, right? HCl's work is to kill microorganisms and activate these both enzymes, and these enzymes also helps in process of digestion. These both enzymes names are renin and pepsin that is present in our stomach, right? तो इस तरह हमारा स्टमक हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? आई होप यू गॉट इट. और हमने ये भी पढ़ा कि स्टमक हैज थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विच जॉइंस स्टमक एंड फूड पाइप इज कॉल्ड कार्डियक, एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड फंडस, एंड द लास्ट पार्ट विच जॉइंस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक, राइट? तो स्टमक के भी तीन भाग होते हैं, जो फूड पाइप और स्टमक से जो जुड़ा होता है ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कार्डियक. बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस, और लास्ट वाले पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और आमाशय से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरी, राइट? ये भी जानेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंजाइम्स, water and HCl. And now we also knew about what is HCl. HCl full form is hydrochloric acid. Hydrogen and chlorine makes hydrochloric acid, which helps in process of digestion by killing the microorganism and activating the enzymes. And these both enzymes are pepsin and renin. Right? So this is all about stomach. Stomach हमारे process of digestion में कैसे help करता है. If we talk about its location in the human body, so it is center left in the human body, right? It is center left in the human body. And if we talk about its size, its shape, so it is J-shaped. It is J-shaped organ. अगर हम लोग आमाशय का शेप का बारे में बात करें तो ये J अल्फाबेट शेप की तरह दिखता है, राइट? तो ये था हमारा पूरा स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या है, स्टमक किस तरह वर्क करता है, राइट? So now in this lecture we knew about what is stomach. Stomach is a muscular hollow internal organ that helps in process of digestion, right? There are some gastric glands which produce gastric juice. Gastric juice contains three components: water, enzymes, and hydrochloric acid. Hydrochloric acid is its work are to kill the microorganisms and activate the enzymes, and these both enzymes are pepsin and renin. It also helps in process of digestion, right? It has three parts. The stomach has three parts. First part which joins the stomach and food pipe is called cardiac. The middle part is called fundus, and the last part which joins small intestine and stomach is called pylori. तो इतना सब हम लोगों ने कुछ
पढ़ा स्टमक के बारे में, राइट. सो दिस इज इनफ फॉर यू, दिस इज इनफ फॉर योर सिलेबस, राइट. देयर आर आल्सो मोर थिंग्स अबाउट स्टमक, बट दैट इज नॉट for your class, right. So this is all about stomach. So let's revise what we studied. Let's note it what we studied today, right. First of all, we studied about what is stomach, right. Next we studied about it has three parts. It has three parts. First part क्या? Cardiac. Second, fundus. Third, pyloric, right. थर्ड चीज हमने सीखी, there are some stomach consists of gastric glands. स्टमक में क्या होते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक glands produce gastric juice. And what is this gastric juice? So gastric juice means it contains three components: water, HCl, earlier we talked about it, and next enzyme. And these all three components helps in process of digestion, right. So these are the points just we talked about in the stomach point, right. So this is all for today. What is stomach and how does it function in our body, right. So in our next video we will talk about small intestine and large intestine. Okay. तो अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है. अभी हमने क्या पढ़ा स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या है, राइट. और स्टमक कैसे हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, राइट. HCl के बारे में पढ़ा. HCl इज अ वेरी हाईली कंसंट्रेटेड एसिड. HCl जो है वो बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है, राइट. एसिड, तेजाब, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं, राइट. सो HCl जो होता है वो एक तरह का तेजाब होता है, राइट. इफ यू टच द HCl फ्रॉम योर एक्सटर्नल पार्ट्स, राइट, सो यू विल बी बर्न्ड. कहने का मतलब कि अगर हम लोग उस HCl जो हमारे स्टमक के अंदर है, राइट, अगर हम उसको बाहर से छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाएगा, राइट. इतना हाईली कंसंट्रेटेड HCl है, वो एसिड है, वो इतना खतरनाक एसिड है, राइट. sometimes when we don't have food on time, right, so it also causes pain, stomach pain. So to get the relief from stomach pain, that time we take antacid, just I told you, नहीं. तो हम लोग समय पे खाना नहीं खाते हैं तब भी हमको उस HCl की वजह से दर्द होने लग जाता है, राइट. तो इस तरह से हम लोग उस दर्द को हम लोग एंटासिड्स लेकर उसको हम लोग क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, राइट. बट इफ यू कंटिन्यूज टू डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, you don't have food on time, right, so it may cause peptic ulcer. अगर हम इसी तरह अगर हम भोजन टाइम पे नहीं खाएं तो होता ये है कि HCl जो है हमारे पेट के अंदर बनता रहता है. और अगर आप लोग ज़्यादा दिन तक इसी तरह अगर हम ऑन टाइम अगर भोजन नहीं करें, सही समय में भोजन नहीं खाएं, तो पेप्टिक अल्सर होने का भी खतरा रहता है. पेप्टिक अल्सर मतलब अमाशय में घाव होता है, इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर, राइट, पेप्टिक अल्सर. तो हमें खाना सही समय पे खाना चाहिए ताकि हम लोग पेप्टिक अल्सर से बच सकें. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ HCl, right. So now this is all for today. Okay, I have a question for you that I'll ask you, and this question is, as you know that stomach can digest
flesh of other animals, when we eat flesh of goat, राइट, जब हम लोग बकरी का मांस खाते हैं तो हमारा स्टमक वो डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, स्टमक इज आल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन, ये भी तो एक मांसपेशी अंग है, राइट, तो ये खुद को क्यों नहीं पचा लेता? व्हाई डजंट इट डाइजेस्ट इटसेल्फ? ये खुद क्यों नहीं पच जाता? राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट, एंड आई विल आस्क द आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट, एंड आप लोग इस आंसर को तैयार करके रखिएगा कि जो स्टमक है वो हम मांस को पचा लेता है, जब हम लोग बाहरी मांस खाते हैं, जैसे बकरी का मांस खाते हैं, राइट, लेकिन स्टमक भी तो खुद एक मांस है, तो वो खुद क्यों नहीं अपने को पचा लेता? राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज डन, राइट, एंड नाउ यू विल revise the all points whatever I taught you, okay, and then complete your assignment. Thank you. In our next video we will talk about the small intestine and large intestine. Okay, thank you.